Am I audible? First of all, I would like to thank Khan sir from the bottom of my heart for all the kind words. Thank you. So first thing first, I am sure all of you must be really happy to see Khan sir here. I mean, I used to wait for Khan sir to come because it gives a lot of positivity, and I used to be elated for days after seeing Khan sir. So I'm sure all of you must be happy seeing him here. So thank you, sir, for coming here. Thank you, sir, for calling me here. And second thing, since I've been a student of KSG, so I would like to take this moment and thank entire family of KSG here. They had been extremely supportive. I mean, I don't think I have words to express how thankful I am that I've been a part of KSG, that I made a choice to come back from Delhi and Indore and stay in Indore and be a part of this institution. So everybody here is so forthcoming, right from teachers to the staff of KSG, everybody is so forthcoming. And this is not publicity, this is me speaking from the bottom of my heart. Nobody asked me to do it. So this is me and my experience, okay? The second thing is that I'll be speaking a little bit about myself, and then we'll talk about the challenges that I faced in my preparation. So as sir has already, I think, spoken enough about me that I come from a district named Alirajpur. I've been brought up there, and initial years of my studies happened in Hindi medium school till 7th standard. And then somebody convinced my father to shift me to English medium school because the chances of me becoming something in Hindi medium school were grim at that time. So that journey from Hindi medium school to English medium school has been very ardent, very tough, because English as a language came really difficult at that time. So that was my schooling. Then further I did engineering from GS IAS Indore. I'm sure a lot of you must be from that college. So happy to see those faces here. And post that engineering I worked for 1 year, and then I came in civil services. So that is enough about me. I think that would suffice. So when I was preparing for the examination, there are a lot of things that we hear, and people tell us that okay, first thing first, I'm so sorry. Are you comfortable in English, or do you want me to be use bilingual, Hindi English? Bilingual? Okay, fine. तो ठीक है, bilingual रखेंगे इसको. तो फॉर एग्जांपल जैसे जब हम यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं तो हमें कई सारे मिथ्स देखने को मिलते हैं कि यू कैन नॉट डू इट इन वन अटेम्प्ट, यू कैन नॉट डू इट लाइक पंचवर्षीय योजना रहेगी, 3-4 साल लगेंगे. सो दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स वी डू हियर, राइट. हमें लगता है कि हमें हिंदी नहीं आती, हमें इंग्लिश नहीं आती, तो हम नहीं कर पाएंगे, हम छोटी जगह से तो हम नहीं कर पाएंगे. एंड समहाउ दोज इनहिबिशंस वी क्रिएट फॉर आवरसेल्फ because somebody has told us, right? So we believe them. Do not do that to yourself. Do not. ठीक है, वो confidence shatter सबसे पहले ही हो जाता है. So always have that kind of faith in yourself that come what may, this is an examination which is simple. Treat it simple. ठीक है, it is simple. But for that you need to start treating it simple. You will have to be very consistent, very hardworking for this examination. But first thing is, the ground rule is that you have to have confidence in yourself. You have to believe that you can do it. Because take it from me, if I did not have that kind of faith, I would have never made it. And this rank is something that is surprise to me also. So if I can do it, I think all of you can do it, right? All of you can do it. There's nothing that can stop you. So okay, there was one question that I wanted to ask. Sir, can I ask this question? So this one word answer that I'm expecting from you as to what is it that you think UPSC is about. One word answer. Consistent. Anything else? Anything else? Okay, anything else? Self-confidence. Yes, very good. Anything else? Perseverance, consistency, hard work, patience, dedication. Anything else? Huh? Aptitude. Attitude, yes, right, attitude. Anything else? So there was one keyword that I was looking forward to, and I don't know how many of you would agree to me. This exam is definitely about all of these things that you have very rightly stated, but I also believe that this exam is about common sense. We fail to apply common sense, and the basic fundamental is common sense. Everything that you see around you, all these subjects, sociology, political science, history, economy, geography, everything is common sense. Once you apply your common sense, you will understand things, you will be able to relate things, right? You've been reading newspapers all your life, you've been seeing things all your life. How difficult that is to connect and write and think about. But
The problem is that we think that this is too difficult, we think that this is too tough to handle, so we forget to apply our common sense, we keep it on the backside, on the back burner, and that is how the problem starts to become bigger. So please always remember, please keep this in mind that it is an exam of common sense. Use your common sense, trust your instincts, and things will fall in place. So this is one thing that I wanted to speak to you about, because having this feeling that this is an exam of common sense, it helped me relieve much of my stress. I used to think that okay, it's common sense, I can apply it, I can do well. So that was one thing. The second thing is that challenges that I've faced. Okay, so the challenges that I've faced, so what do you think, like I'm sure all of you must be preparing for UPSC. What do you think are the challenges that you face? Like one liner answers for that. Sorry? Yeah, thank you. And? No challenges. Focus. Yes. Everybody sorted. Everybody seems sorted here, I guess. Yes, it is. Okay. Yeah, that is very right. Very rightly said. So yes, these are the challenges. You feel demotivated because it's human, है ना. Every third day आपको लगेगा कि यार नहीं हो रहा है. There are doubts that you have for your own self. एक टेस्ट में बुरे नंबर आते हैं, हमें लगता है ख़त्म हो गई ज़िंदगी, अभी कैसे होगा. These things happen. These things happen to everybody. Not like जो भी एग्जाम में फर्स्ट रैंक ला रहा है या जो लास्ट रैंक ला रहा है या जिसका नहीं हो रहा है. Everybody goes through that same process. So you have to hold yourself there. ठीक है, यहाँ पे ये फील नहीं करना है कि टेस्ट में बुरे नंबर आए. सी इट थ्रू अ डिफरेंट लेंस. सी इट फ्रॉम द लेंस ऑफ पॉजिटिविटी दैट ओके दिस इज समथिंग दैट आई डू नॉट नो, है ना. तो हम लोग बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं ये सोचने में कि नंबर नहीं आए. वी क्राई अबाउट इट, वी कॉल समबडी एंड वी क्रेव अबाउट इट फॉर 2 hours. वी डोंट रियलाइज दैट दोज 2 hours हैज़ टू बी इन्वेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग व्हाई आई डिड नॉट गेट दोज मार्क्स. Right? So first thing that you need to do with yourself is that do not cry about whatever bad is happening. Try and figure out solutions to it. Use your time effectively. तो बुरे नंबर आ रहे हैं, कीप इट असाइड, चेक कर लो, रख दो, बट देन थिंक अबाउट क्यों नहीं आया, कहाँ दिक्कत हुई है ना. सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन डूइंग दैट, बिकॉज वो बिल्कुल यूजलेस एक्सरसाइज है, वो हेल्प नहीं करेगा. मुझे भी कभी नहीं किया. देन दीज आर द थिंग्स दैट हैव लर्नड इन द प्रोसेस. मैं भी इनिशियली ये सब गलतियाँ करती थी. इट्स नॉट लाइक हम गलती नहीं करते, हम सब गलती करते हैं, बट देन वी लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स. हमें लगता है ये करेक्शन हमें करना है. सो दिस सेल्फ करेक्शन प्रोसेस हैज़ टू बी देयर थ्रू आउट योर जर्नी. पूरे 1.5 साल की जो प्रोसेस है वो सेल्फ करेक्शन की ही प्रोसेस है. एंड आई ऑल्सो रिमेंबर खान सर वन सेड अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, एंड दिस वॉज आई थिंक very initial days of my KSG journey. So he said that you don't become an officer with one rank or one result day or with one PDF. You become an officer in the entire process. So you have to behave like one. You have to grow like one. तो जो भी आपकी 1.5-2 साल की जर्नी है, please remember that that journey will make you an officer. तो उस पूरी प्रोसेस में यू हैव टू थिंक फ्रॉम दैट लेंस कि अगर एक ऑफिसर होता, वुड दैट पर्सन बी वेस्टिंग टाइम, वुड दैट पर्सन बी क्राइंग ओवर सच स्मॉल थिंग्स. आपको सडनली अपनी प्रॉब्लम्स छोटी लगने लगेंगी. यू विल नॉट क्राई ओवर वेरी पिटी इशूज़, वेरी सिंपल इशूज़, बिकॉज यू विल रियलाइज दैट those people who are officers, they do not really have time for these small things. उनको stride में लेना है अपनी चीज़ है ना. So take things in your stride and do not fall prey to the negative energy that is there around you. A lot of people will be there around you, will demotivate you, will tell you that ये आप नहीं कर सकते, ये आपसे नहीं होगा. स्पेशली रिश्तेदार तो बहुत ज़्यादा होते हैं. तो ये पेरेनियल प्रॉब्लम है हम सबकी. तो जो भी नेगेटिव लोग हैं, थोड़ा सा उन्हें 2 साल के लिए ब्रेक दीजिए, अपने आप को 2 साल के लिए उनसे ब्रेक दीजिए. एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन आपका हो जाता है ना, उस दिन पीपल इवन हु हैव नॉट कॉल्ड यू फॉर लास्ट 20 years, दे विल कॉल यू. एंड पीपल फ्रॉम आई डोंट नो व्हाट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, दे विल कॉल यू एंड दे विल बी लाइक, ओ वी न्यू यू वुड डू दिस. ठीक है, that happens. So wait for that moment. Do not feel disheartened that okay, this person is cursing me, this person is saying something. Take it positively. Take it that okay, this is your journey, you're creating your own journey. Okay, so when you have that goal in mind कि okay, this is the day, यहाँ मुझे पहुँचना है, इसके बीच में जितनी भी चीज़ें हैं, these are all, even if they are negative, take them positively. ठीक है, वहाँ पहुँच जाएंगे, all of this will turn positive. सब zero positive हो जाएगा, zero भी नहीं positive हो जाएगा. So that is one thing. Coming to दूसरे वाले चैलेंजेस, ये तो मेंटल इश्यूज़ थे, ये तो थोड़े से पर्सनल इश्यूज़ थे जिसके बारे में मैंने बात की. बिकॉज आई पर्सनली फील दैट खान सर हैज़ ऑलवेज स्पोकन अबाउट दीज पर्सनल इश्यूज़ एंड आई फील दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एस्पिरेंट्स लाइफ, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. it's a 1 year 2 year minimum process and it can go on even more than that. So you have to take care of your personal health, mental health very nicely, क्योंकि तभी आप रह पाओगे, प्रेजेंट रह पाओगे इस प्रोसेस में. ठीक है. द सेकेंड थिंग इज़ कि एक चैलेंज और बच्चों को बहुत आता है कि क्या पढ़ना है,
है ना, कैसे पढ़ना है. तो आई थिंक ये भी एक इशू है. बट मोर देन दैट देयर इज समथिंग दैट वी ऑल हैव बीन वेरी इग्नोरेंट अबाउट, आंसर राइटिंग. मतलब हम करते ही नहीं, हम पढ़ते जाते हैं एंड वी टेंड टू प्रोक्रास्टिनेट कि मैं नहीं लिखूंगा आंसर. समहाउ वी फील दैट 100% तैयारी नहीं हुई है, लेट्स नॉट राइट इट, लेट्स स्किप द टेस्ट, आई विल राइट ऑन नेक्स्ट संडे. Procrastination will not help you, it will not take you anywhere in life. Trust me, even on the day of mains examination you would feel that ये रह गया. Last moment तक you would be revising something, you would feel ये नहीं हुआ. Even in exam hall you would curse yourself, ये नहीं हुआ. ठीक है, but that has to stop, that buck has to stop somewhere. You please do not procrastinate. KSG also has this wonderful program of CIWP and I cannot emphasize enough on that. It is beautifully done. I don't think any other coaching even in Delhi is doing that. टेक एडवांटेज ऑफ दैट. उसको लिखो बैठ के. हर महीने आई थिंक 15 days और 30 days देयर इज़ अ टेस्ट. डू दैट, प्लीज़ राइट इट. आई रोट आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द टेस्ट एट CIWP हियर एंड बिलीव मी, जो आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट आपका उससे आएगा. आई डोंट थिंक उतना आपको इफेक्टिवली कोई चीज़ हेल्प कर सकती है, बिकॉज दे हैव थॉट अ लॉट इन डिज़ाइनिंग दैट पार्ट. तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता था. आई यूज़ टू वेट कि CIWP कब होगा, कब खान सर आएंगे, माइंड मैपिंग बताएंगे टॉपिक्स के बारे में. सो दैट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट, वेरी ब्यूटीफुली डिजाइंड. मेक यूज़ ऑफ दैट, मेक गुड यूज़ ऑफ दैट. ठीक है. एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट हैव लर्न माइंड मैपिंग फ्रॉम खान सर, if I'm not wrong. Okay, they've started. That part will come. Wait for that part. I'm telling you that you would appreciate it as much as I'm doing right now. So there's a reason I'm telling you this. So mind mapping, if you learn from him, I'm sure you would ace mains like anything. So there's a reason people from KSG do very good in mains, right? So that part is because of the mind mapping that he teaches us. He teaches us to think in all the dimensions that are possible. So learn that thing from him. And please call him again and again, please tease him again and again, and I think he would be more than happy to come and help you all there. So he's very kind and very positive person there. So the third thing is, okay, so consistency has to be there. Like there is no remedy to that, there is no alternative to that. You have to study 8 to 10 hours a day, even more than that. I would not tone it down and say just because I want to make you feel better that study 6 to 8 hours. Those who are working, it's understandable for them that they can take out 4 to 6 hours or 8 hours. It is understandable for them. But those who are wholeheartedly preparing for the examination, if they are not doing anything else, please invest your time and energy in this. Okay, do not indulge in activities that are not fruitful, that are not making you better. Indulge in things that will make you better as an individual. 2 साल की ईमानदार मेहनत है. ट्रस्ट मी, जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो. जिस भी रैंक को लाना चाहते हो, यू कैन गो देयर. बट 2 साल की बहुत ईमानदार मेहनत चाहिए और कोई कंप्लेन नहीं चाहिए उसमें अपने आप से ना कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये गलत है. डू नॉट डू दैट. 2 साल के लिए सोच लो कि आई हैव नो राइट टू कंप्लेन, लेट मी बिकम समबडी एंड देन थिंक अबाउट इट. ठीक है. सो 2 साल नो कंप्लेन्स, जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, बिल्ड योर सेल्फ, एंड बिलीव मी इट्स एन एनरिचिंग प्रोसेस. ये 2 साल में आपको जितना चेंज करती है, मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज़ आपको इतना एज एन इंडिविजुअल चेंज करने की क्षमता रखती है. बिकॉज यू रीड सो मच, यू डेवलप सो मेनी स्किल्स, यू नो योर सेल्फ बेटर इन दोज 2 years, यू बिकम अ बेटर पर्सन. सो इन्वेस्ट, मतलब आई यूज्ड टू टेल माई सेल्फ दैट दीज आर द 2 years that I'm investing on myself. I had a personal grudge because I went to Kota in 11th standard and could not do well. I failed miserably. So I always used to feel that I didn't work hard and I wasted my parents' money and मैंने कुछ नहीं किया. मुझे लगता था ये, तो मेरा वो पर्सनल ग्रज था कि मुझे इसकी तैयारी करनी है, सो दैट आई डू नॉट टेल माई सेल्फ दैट आई डिड नॉट गिव माई 100%. तो मेरा बस वो था, आइडिया मेरा यही था कि हो नहीं हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट देन दिस सेटिस्फैक्शन हैज़ टू बी देयर. आई कैन नॉट होल्ड दिस again for myself for so many years that I did not do well, that I did not work hard enough. So invest that amount of time on yourself. Believe me, that satisfaction will always be there with you, no matter what. जब मेरा नहीं हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में, रिजल्ट आया था and I missed it by 4 marks. So आधे घंटे के बाद मुझे बुरा नहीं लगा, because I knew that I had put in my best, that I did all that I could. तो मैं satisfied थी कि ठीक है, it has changed me as an individual, I am happy, it's okay. नहीं हुआ, it's okay, we'll try again. So that satisfaction will stay for you forever. ये सब चीज़ें subside कर जाएगी 2-3 दिन में. All of this fame, glamour, all of that subsides in 2-3 days maybe. But that satisfaction stays with you. Even failure would subside in 3-4 days. ज़्यादा stay नहीं करता failure. भूल जाते हैं, we tend to forget. But we always remember कि यार मैंने मेहनत की थी. ठीक है. So make sure that you have that with you. फिर एक और चीज़, हाँ, CIWP I have spoken about.
there's one more thing that this is one mistake that I've made in my first attempt, and I tried to improve it in my second attempt. How many of you have seen previous year question papers of UPSC? Honestly, very honestly, how many of you? All of you have seen? Pakka? I would have never been able to raise my hand like that in first attempt. I'm really ashamed of myself right now in saying this. But how many of you have written question papers or solved those question papers? See, you can see for yourself, right? So see, previous year question papers are your North Star. You understand North Star? All of you understand North Star? आपका वो guiding light है ना? जिस एग्ज़ाम को आप फेस करने वाले हो, इफ़ यू डू नॉट सी व्हाट द एग्ज़ाम इज़ अबाउट, इफ़ यू डू नॉट सी वो क्या डिमांड कर रहा है, तो आप हे वायर पढ़ते रहोगे, कभी समझ नहीं आएगा जाना कहाँ है. इट इज़ इमेंस. हम लोग बोलते हैं ना कि यूपीएससी ओशन है. मुझे नहीं लगता यूपीएससी ओशन है, यूपीएससी लेक है. बट आप उसको लेक तो बनाओ पहले, है ना. हम ट्रीट ही उसको ओशन की तरह करते हैं. वी ट्राई टू रीड एवरीथिंग अंडर द सन एंड देन वी फील ओवरवेल्म्ड. हमें लगता है कि यार ये कैसे होगा, इतना सारा सिलेबस है. उसको लिमिट करना है. उसको लिमिट आप कैसे कर सकते हो? लिमिट आप ऐसे करोगे कि आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए. For that you need to solve question papers, you need to look at syllabus again and again, and everybody here at KSG or at any other coaching institute wherever you go, they keep on saying this. They will tell you to read questions, to solve questions, but we do not do it. हम randomly mock test देते हैं, but हम लोग previous year question paper solve ही नहीं करते हैं. I made this mistake and I suffered because of it. Do not do this mistake, do not repeat what I have done. ठीक है? And solve your question papers very beautifully, do it. Try to find model answers for mains question papers that you're writing, and make it a point that 2013 onwards to 2020, all the mains question 1, 2, 3, 4, you write them. Not just write them, get them evaluated by your faculty members. Get model answers of those questions. Prepare model answers because UPSC tends to repeat itself. ऐसा नहीं है कि UPSC में सारे नए questions आते हैं. I can tell you multiple questions that were repeated this year also. Globalization हर साल सेम आ रहा है. Impact on culture globalization का. It is coming for last 4 years. अर्बन फ्लड्स 2016-17 में आया था, इस बार फिर से आया था. नैक्सलिज्म 3-4 साल पहले आया था, इस बार फिर आया है. बॉर्डर सिक्योरिटी आ चुका है, फिर आया है. दिस इज समथिंग दैट आई रिमेंबर. आधे तो मुझे याद भी नहीं है. सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज यूपीएससी टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ. उसके कुछ फेवरेट एरियाज, और वो फेवरेट एरियाज आप तब समझेंगे जब आप इन्वेस्ट करेंगे उस फेवरेट एरिया में. सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लुक एट the previous year question papers, solve them. That is the first thing that you need to do. Okay, do not skip it. Baki sare mock test will come later. First thing first, you need to do this. Make it a point that you solve all of them without a miss. And I also got to know that current connect is being made by sir, and I did not know this earlier, but sir thank you so much. मैंने अपना पूरा preparation 12 महीने मैंने magazine जो पढ़ी थी, that was current connect. It's a brilliantly and beautifully made magazine. So read monthly magazines every month. They are investing a lot of their energy in making it. मैंने personally वही पढ़ी थी. I used to take magazines from outside and like sir used to distribute it there. So every month I used to wait for it. I used to read it. एक sitting में करती थी मैं. 8 to 10 hours you have to invest for a 80 or 100 page odd magazine. सुबह से बैठिए संडे को, शाम तक ख़त्म करके उठिए. अदरवाइज इट डिफीट्स द पर्पस ऑफ रीडिंग द मैगजीन ऑल टुगेदर इफ़ यू आर नॉट एबल टू फिनिश इट, इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिकनेक्ट विथ इट. ठीक है? सो मेक इट अ पॉइंट दैट ऑन संडे, बिकॉज न्यूज़पेपर इज़ रियली शॉर्ट ऑन संडे. रीड मैगजीन्स एक सेटिंग में बैठ के, फिनिश इट सो दैट इट डजंट बर्डन यू ऑन मंडे. यू हैव अ शेड्यूल फॉर मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे. सो वहाँ पे वो बर्डन नहीं आएगा. संडेज़ को आप ये चीज़ करिए. डू दिस. मैगजीन्स पढ़नी है ना. इफ़ KSG पढ़ लो, कुछ और पढ़ना है कुछ और पढ़ लो. बट आई पर्सनली रेड KSG, मुझे अच्छी लगी एंड आई नेवर थॉट ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम इट. सो दैट इज़ व्हाट आई एम शेयरिंग टू यू अबाउट. देन सो दिस इज़ पार्टली अबाउट द चैलेंजेस दैट आई फेस. मुझे होम सिकनेस होती थी, मुझे घर जाने का भी मन करता था. बट आई रिमेंबर मैं आई थिंक 1.5 साल मैं घर नहीं गई थी. राखी, दिवाली और बहुत गालियाँ पड़ती है, ट्रस्ट मी. अभी सब रोज़ी लग रहा है, बट वंस यू कॉल योर पेरेंट्स एंड से मैं दिवाली पे नहीं आ रही हूँ, दे गो मैड अबाउट इट. एंड इट्स वेरी राइटली सो, राइट? बिकॉज किसके पेरेंट्स चाहेंगे कि बच्चा दिवाली पे घर नहीं आए या वो अकेले सल्क कर रहा है अपने रूम में? नो बडी वॉन्ट्स, नो पेरेंट्स वुड वॉन्ट दैट. बट डू इट. थोड़ा पेन है शॉर्ट टर्म में, बट डू इट. 1.5 साल बी हियर, बी इन द प्रोसेस, एंड बिलीव मी, the moment you come from that place to this place, life changes. It is life changing moment. I cannot express in words. I cannot tell you how I feel right now. This is overwhelming, even beyond that. So I cannot tell you how I feel right now, but I really want all of you to feel this way once in your life, right? So invest those 2 years in yourself, and I'm sure all of you would be able to come here
celebrate the moment for yourself with your family. So that is something that you have to make sure for yourself and your family. And so there's one more thing that I wanted to talk to you about, starting early in the preparation. So how many of you are in college right now? Many. Okay, so this is a very good thing that you're doing. Starting early is amazing, right? Because it gives you a head start, it gives you age on your side, and you're young, you're energetic, you're charged up. So start early in the preparation, and it is very important because it gives you a lot of time to plan better, to execute better, and to invest your time in a better manner. You are not in a hustle to complete things in a haywire manner. तो जल्दी शुरुआत कीजिए चीज़ों की, समझिए, और ये मत सोचिएगा कि 2 साल बाद अटेम्प्ट देना है तो हम थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, या 3 साल बाद देना है तो हम थोड़ा चिल होकर पढ़ सकते हैं. इफ़ यू आर इन सिटिंग इन द क्लासरूम, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ योर पेरेंट्स मनी ऑन दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट, इन्वेस्ट इट. घर जाइए और 3 घंटे की क्लास के बाद 10 घंटे खुद इन्वेस्ट करिए. बिलीव मी, 1 से 1.5 साल की मिनिमम प्रिपरेशन इज़ नीडेड फॉर दिस एग्जामिनेशन. तो ये नहीं सोचना है कि मेरा 2 साल बाद अटैम्प्ट है तो मैं 1 साल बाद कोचिंग कर लेता हूँ, भी 1 साल बाद तैयारी करूँगा. लॉट ऑफ पीपल डू दैट, आई हैव सीन माई सेल्फ people doing that. Do not do that. If they are investing energy on you, give something in return to them. They will be more than happy to help you out, because everybody here is so forthcoming. You go, and I used to go every day with 5-6 answers, and I used to feel एक दिन भगा देंगे मुझे, ये रोज़ आ जाती है. So I used to go every day. I used to tease sir also. I used to be like, I was a pain for sir every day. So do that. People here are very good. Write answers, get them evaluated, and that will make you better. That will make you comfortable with the process. क्योंकि I'm sure आप में से कई लोग 10th और 12th में टॉपर्स रहे होंगे, अपनी स्कूल के, अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने एरियाज़ के. So how do we become toppers there? We become toppers because we have faith that we can do it, because we do work for it, right? 10th में तो 10th भी easy नहीं लगती है. किसको लगती है 10th में 10th easy? किसी को नहीं लगती है. 10th के बच्चे को बोलोगे, वो बोलेगा कि यार बहुत टफ 10th का है, 10th है. Treat it in the same manner. भाई भरोसा रखो कि हाँ मेरे लिए ये 10th है, मेरे लिए 12th है, उतनी ही डिफिकल्ट है, बट आई विल डू इट. आई विल बी एबल टू डू इट बिकॉज आई हैव डन इट अर्लियर. यू हैव डन थिंग्स वंस इन पास्ट, यू कैन डू देम अगेन. सो हैव दैट फेथ ऑन योर सेल्फ. सो दिस वॉज वन थिंग. Do not lose hope. This I think I've spoken about that. Do not lose hope even if you get less marks. मुझे personally sharing here with all due respect कि मैंने जब दोनों अटैम्प्ट दिखे हैं तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में मुझे प्रीलिम्स के जब मैं मॉक टेस्ट देती थी तो मेरे 90+ मार्क्स बहुत रेयरली आते थे. तो आई ऑलवेज यूज टू फील कट ऑफ 105 है, मेरा कैसे होगा, ठीक है. बट देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट मॉक्स आर डिफरेंट एंड द एग्जामिनेशन इज डिफरेंट. Even if you score 70 marks 2 days before your examination, do not lose hope, ठीक है, because it's the 1 year of preparation that goes into that 1 day paper. तो वो 2 घंटे ना आपको अपना, जैसे मैंने बोला ना इनिशियली कि now we'll connect the dots here. I said that this exam is about common sense, right? So questions will be new in prelims. कैसे सॉल्व होगा? कॉमन सेंस अप्लाई करके. वो कॉमन सेंस कब अप्लाई होगा? जब आपका पीस ऑफ माइंड है, जब आप पूरा आराम से बैठे उस जगह पे. कॉमन सेंस तभी काम करता है. कॉमन सेंस हाइपर एक्साइटेड मोड में कभी काम नहीं करेगा भी तो उल्टा करेगा, ठीक है. सो मेक इट अ पॉइंट दैट व्हेन यू आर गोइंग इन देयर, टेक दैट एज अ सेमेस्टर एग्जाम ओनली इन द काइंड ऑफ फीलिंग, राइट. तो थोड़ा चिल होके जाइए, अंदर काम रह के जाइए, और 2 घंटे पूरा कॉमन सेंस अपना एक्टिवेट रखिए, एंड बिलीव मी मार्क्स वैसे ही अच्छे आएंगे आपके. तो डू नॉट फील बॉक डाउन कि यार मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा. बी कंसिस्टेंट, राइट टेस्ट पेपर्स डिस्पाइट द स्कोर्स दैट यू गेट, बिकॉज दोज राइटिंग द टेस्ट दैट यू राइट, दोज विल बी द टेस्ट दैट विल हेल्प यू in improving your scores there. So this is one thing that I wrote to myself 2 years back, and this was on my table, that your purpose has to be bigger than your pain. So only then will the pain subside and the purpose survive. So this quote I had written on my table 2 years back, and it has always been there. And it used to remind me that okay, this pain is small, purpose is larger, purpose is bigger. So remember your purpose, remember your why of coming into this journey. Everybody has a different why. There can be no 2 similar whys for a person. Remember your why, because it's a long journey, it's a marathon, and you will stay in the process only when you remember your why, only when you keep reminding yourself of that why. So keep that in mind, and with that I think
I think whatever I wanted to speak to you about, I think I've spoken all of that. So with that, wish you all the very best, and I cannot thank Khan sir, Anshul sir, and everybody at KSG here for having me here. It's a pleasure to be here and interact with everybody. So it's a moment that we all live for, right? We want to come from that place to come here and speak our heart out. So thank you so much, sir, for having me here.